हेलो किड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने अभी आर्टिकल पढ़ा था। यू नो दैट ए एन एंड द दीज थ्री वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल। आपने यूज ऑफ ए और एन पढ़ लिया था, यूज ऑफ द बाकी रह गए थे। सो लेट्स कंटिन्यू विथ यूज ऑफ द। वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्सन or thing or place, but we use when we talk of a particular person or thing or place, we use the. जैसे give me a book means here I am talking about any book, so I used a book. But give me the book you are reading means I am talking about only that particular book which you are reading. So हमने यहाँ पे the का यूज किया। give me the book you are reading. Open a box means I am talking about any box, so I used here a box. But when I say open the box behind you means I am talking about that particular box which is behind you, so I used here the box. Clear? A or an is used for any person, anything or any place, and the is used for a particular person, particular thing or particular place. Now when we speak of a person or thing for the first time we use a or an, but when we speak of it again we use the. जैसे I found a purse. First time I am talking about purse, so I used here a. I found a purse. The purse was lying under a book. Again हमने उसी पर्स की बात की तो हमने the का यूज किया। Clear? A or an is used when we are speaking of something for the first time, and the is used when we are speaking of the same thing in the following sentences. इसके अलावा यूज ऑफ द और भी बहुत जगह होते हैं, जैसे बिफोर द नाउन्स दैट आर यूनिक। जैसे आप मून सन की बात करते हो तो हम लिखेंगे द स्टार्स, द मून, द सन और द अर्थ etc. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स जैसे द गंगा, द यमुना। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ सी एंड ओशंस जैसे द Indian Ocean, the Arabian Sea. Before the name of mountain ranges जैसे the Himalayas, the Aravallis. Before the name of countries, the Netherlands, the United States of America. And before the name of famous building जैसे the Red Fort, the India Gate etc. And before the names of holy books and newspaper जैसे the Gita, the Bible, the Ramayana and the Times of India, the Hindustan Times etc. Now clear a and the. Once again, article a is used before a singular noun beginning with a consonant sound. Article an is used before a singular noun beginning with a vowel sound. Article the is used before particular person or thing जैसे the moon, the stars, names of book, well known or famous buildings, the holy books, the newspaper etc. That's all for today. Thank you.